Today I will discuss depreciation of domestic currency and its effect on exports and imports, and also I will discuss the difference between depreciation and devaluation. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss depreciation of domestic currency. Alternate name it is appreciation of foreign currency. जब फॉरेन करेंसी का प्राइस में वृद्धि होता है, जब फॉरेन करेंसी का वैल्यू में वृद्धि होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, तब डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कम हो जाता है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है. क्लियर? सो ये है डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. सो अगेन जस्ट आई वांट टू डिस्कस depreciation of domestic currency means value of the domestic currency falls in comparison to the foreign currency. यदि हम फॉरेन करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे, हमारा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा. क्लियर? सो इन दिस केस जस्ट वी रिमेंबर व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट increases, when foreign exchange rate increases, when price of foreign currency increases, when value of the foreign currency increases, then domestic currency depreciates. So when price of the foreign, जब foreign currency का प्राइस बढ़ जाता है, जब foreign currency का वैल्यू बढ़ जाता है, जब foreign exchange रेट में वृद्धि होता है, तब डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कम हो जाता है, तब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है. then value of domestic currency falls in comparison to the foreign currency. So the definition of depreciation of domestic currency, it means it refers to the decrease in the value of the domestic currency in terms of foreign currency. So when foreign exchange rate rises, or price of the foreign currency rises, or value of the foreign currency rises, then value of the domestic currency rupee falls in terms of foreign currency. जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में वृद्धि होता है, जब फॉरेन करेंसी की प्राइस में वृद्धि होता है, जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू में वृद्धि होता है, तब डोमेस्टिक करेंसी रूपी की वैल्यू घट जाता है. उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं. तो इसलिए डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अल्टरनेट मैनर वी कैन कॉल इट अप्रिसिएशन ऑफ foreign currency. So in case of depreciation of domestic currency, more units of domestic currency required to purchase one unit of foreign currency. Clear? So in case of depreciation of rupee, or in case of depreciation of domestic currency, more units of domestic currency required to purchase one unit of foreign currency. Example में दे दिया. In my example, foreign exchange rate rises from $1 rupees 50 to $1 rupees 60. Suppose in this case rupees in terms of dollars. Okay, rupees in terms of dollar. Example, initial exchange rate was $1 is equal to rupees 50. Now it is increased to $1 is equal to rupees 60. यहाँ पर डॉलर का वैल्यू में वृद्धि हुआ, प्राइस ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, or foreign exchange rate increases. So in this case domestic currency, value of domestic currency falls, domestic currency depreciates. Clear? Price of domestic currency falls. Okay, तब हमारा डोमेस्टिक करेंसी रूपी का मूल्य ह्रास होता है. तो इसी केस में एक्चुअली व्हेन वैल्यू ऑफ $1 rupees 50 increased to $1 is equal to rupees 60. So in this case actually we pay more 10 rupees, we pay additional 10 rupees to obtain $1. Okay, for Indian residents pay additional 10 rupees to obtain $1. And for USA residents, when they want to exchange $1 with rupee, then they get additional 10 rupees by exchanging $1 in my example. Okay, so in this case we clear that due to depreciation of domestic currency, when foreign exchange rate increases,
or when in this case actually dollar in terms of rupees, when value of dollar increases, then domestic currency rupee depreciates, the value of the domestic currency decreases. So in my example, $1 is equal to rupees 50 increased to $1 is equal to rupees 60. So when we want to obtain $1, then we pay additional 10 rupees to obtain $1 in my example. And similarly for foreign residents, when they want to exchange $1 with rupees, then they get additional 10 rupees by exchanging $1. Clear? सो इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट्स होता है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है. क्लियर? So we know that basically depreciation of domestic currency means value of the domestic currency rupee, okay, falls in terms of foreign currency in dollars. Actually here I have taken dollar in terms of rupees. Clear? So due to depreciation of domestic currency, 1 unit of foreign currency, it means 1 unit of dollar can buy more rupees worth of goods and services from India. Clear? For example, you see, suppose in my example, same $1 it was rupees 50. Now it is increased to rupees 60. Suppose for example, you listen. Suppose Indian tea packet, price of Indian tea packet it is rupees 50. So in preceding time when $1 equal to rupees 50, then USA residents paid $1 to obtain one Indian tea packet. But now when $1 value of $1 increased to rupees 60, from 50 to rupees 60, then in this case same price of Indian tea packet remains same, it is rupees 50. So USA residents by USA buyer pay less than $1 to obtain one Indian tea packet, because now $1 value is rupees 60, Indian tea packet it is rupees 50, so they pay less than $1. So due to depreciation, basically 1 unit of foreign currency can buy more rupees worth of goods and services from India. So it means alternatively, it means USA residents spend $1 and purchase more rupees worth of goods and services from India. In my example, initially $1 purchase, initially when $1 equal to rupees 50, at that time USA residents spent $1 and purchased 50 rupees worth of goods and services. But now when value of dollar increased to rupees 60, now they spend $1 and purchase 60 rupees worth of goods and services from India. So due to depreciation of domestic currency, 1 unit of foreign currency, it means here in $1 can buy more rupees worth of goods and services from India. Next one, similarly, it means with the same amount of dollars, जितना डॉलर वो पहले खर्च करते थे अभी वो उतना ही डॉलर खर्च करेंगे, मगर इंडिया से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदेंगे. इट मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स, ओके, हाउ मेनी dollars they spent in preceding time, now they spend same amount of dollars, but USA residents purchase more goods and services from India. So that is to say exports to USA will increase. It means Indian goods and services are cheaper for USA residents. So due to depreciation of domestic currency, overall conclusion, here actually I have drawn here I have drawn dollars in terms of rupees. So my in my exchange rate it is dollars in terms of rupees. But overall conclusion, we have detected that due to depreciation of domestic currency, Indian goods and services are cheaper for the foreign buyers. So they make more demand on Indian goods. So it promotes Indian exports. So जब हमारा डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट होता है, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रूपी फॉल्स, व्हेन डोमेस्टिक करेंसी depreciates, then exports increases. Okay, exports means more goods selling in the foreign market. It means foreign buyers make more demand on Indian goods and services.
Alternatively, I want to discuss the effect of depreciation of domestic currency on imports. Okay, imports actually, it means foreign goods selling in the domestic market. But now, actually, due to depreciation of domestic currency, in my example, you see, we pay 10 rupees more because in my example, $1 rupees 50 increased to $1 is equal to rupees 60. So basically, for Indian residents pay 10 rupees more to obtain $1. One example, you see, one USA tea packet price is $1. So when value of $1 was rupees 50, then at that time Indian residents paid rupees 50 to obtain one tea packet of USA. But now price of USA tea packet remains same $1. But now, if we are going to purchase, if Indian residents they are going to purchase one USA tea packet, then they pay 60 rupees. In my example, 10 rupees more. So it means USA goods and services are costly and dearer for us. So same example here I have written. It means more units of rupees required to purchase $1 worth of goods and services from USA. अभी मैं एग्जाम्पल बताया, जैसे मेरा एग्जाम्पल में अभी जो यूएसए टी पैकेट $1 था, तो पहले हम 50 रुपीज़ पेड कर रहे थे मेरा एग्जाम्पल में, अभी हम 60 रुपीज़ पेड कर रहे हैं. भाई यूएसए टी पैकेट का प्राइस सेम है, $1 है, पर पहले 50 रुपीज़ पेड कर रहे थे, अभी 60 रुपीज़ पेड कर रहे हैं, 10 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हैं. So it means more units of rupees required to purchase $1 worth of goods and services from USA. Similarly, with the same amount of money, how much amount of money Indian residents spent in preceding time when $1 equal to rupees 50. Suppose in my example, now the same rupees now they spend, but they purchase less quantity of goods and services from USA, because for $1 we pay 10 rupees more. So like before, now also we spend same amount of money like before, but Indian residents purchase less quantity of goods and services from USA. So ultimately imports from USA is costly one. It means USA goods and services are costly for us, are dearer for us. So due to depreciation of domestic currency, foreign goods and services are costly for the Indian buyers. फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इंडियन बायर्स के लिए कॉस्टली हो जाएगा. सो बेसिकली आवर डोमेस्टिक रेसिडेंट्स, इट मीन्स इंडियन बायर्स, दे मेक लेस डिमांड ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस imports decreases. So overall conclusion, we have detected that due to depreciation of domestic currency or alternatively due to appreciation of foreign currency, same thing, depreciation of domestic currency or appreciation of foreign currency, exports increases and imports decreases. Clear? So effects of depreciation and devaluation same, but actually one question is arising, कभी कभी कोई पूछते हैं कि depreciation devaluation actually दोनों समान नहीं है. अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर दोनों का इफेक्ट सेम है. जैसे इफेक्ट ऑफ devaluation on exports and imports, इफेक्ट ऑफ बोथ सेम है. बेसिकली इन बोथ द केसेस, depreciation, devaluation, both the cases वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. मगर एक्चुअली हम देखेंगे वो इफेक्ट सेम है, मगर दोनों का डेफिनेशन अलग होगा. तो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन. डेप्रिसिएशन इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये जो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू में गिरावट आता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ये डोमेस्टिक करेंसी जो रुपी का वैल्यू में मूल्यह्रास होता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वी नो दैट इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. बट इन केस ऑफ डिवैल्यूएशन, fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency due to interference of the government. We know that in case of fixed exchange rate, government actually fix the exchange rate. In case of fixed exchange rate, government intervention is there. Government interfere to determine the exchange rate. So here in case of devaluation, value of the domestic currency falls in terms of foreign currency due to interference of the government. जानबूझकर गवर्नमेंट क्या करता है ना,
फॉरेन करेंसी का प्राइस को बढ़ा देता है। यानी जैसे हमारा वैल्यू कम है, जैसे $1.50 था, गवर्नमेंट उसको $1 = 60 कर देता है मेरा एग्जाम्पल में। तो जब डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है तब हमारा करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है। वैसे ही आप यूरो करेंसी लो, जैसे 1 यूरो, सपोज 1 यूरो वाज इट मीन 70 रुपीज़ था, नाउ इट इज़ इंक्रीज्ड टू ₹90। जब यूरो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है तब हमारा रुपी का वैल्यू कम हो जाता है। तो अल्टरनेटिवली वी नो दैट व्हेन price of foreign currency increases, then price of domestic currency falls. Value of the foreign currency increases, then value of the domestic currency falls. So ये जो करता है गवर्नमेंट इंटरफियर करके करता है। जैसे सपोज गवर्नमेंट अभी जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में 1 यूरो 70 रुपीज़ था, अभी उसको गवर्नमेंट बढ़ाकर उसको 90 रुपीज़ कर दिया। तो ड्यू टू इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, सो ड्यू टू दिस डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स। सो वो दोनों समान नहीं है, एक में गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, एक में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है। डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट इन केस ऑफ डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज देयर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज देयर। सो डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैं बताया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्चुअली एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। But in case of devaluation, it takes place under fixed exchange rate. Fixed exchange rate, the exchange rate officially declared by the government. Okay, exchange rate officially declared by the RBI on behalf of the government. Clear? Depreciation take place due to market forces of demand and supply. ये बहुत सिंपल है। जैसे depreciation take place जो value of the domestic currency falls और price of foreign currency increases और foreign exchange rate increases. Okay, it take place due to market forces of demand and supply, but devaluation it take place due to government. Clear? So please my friends, please see the video till the end. Definitely you can get all the informations clear. So subscribe my channel Asit Sarikomania.